perform experiment number 4. Now, what is your experiment number 4? Before starting with experiment number 4, please see the experiment number C that I have already uploaded. Okay student, चलिए move करते हैं आगे. Now, what is experiment number 4? Harmonic analysis of AC and DC side voltage and current of 6 pulse converters in rectifier mode. As थर्ड एक्सपेरिमेंट के आगे का पार्ट हम लोग फोर्थ एक्सपेरिमेंट है. What we have to do in experiment number 2 and 1? We have performed the experiment, we have seen the waveforms, and after that we have analyzed the FFT. Similarly, here also in experiment number 3 we had performed the experiment, and in experiment number 4 we are going to analyze the harmonics. Okay, so बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर हमने जो सेटअप बनाया था, सेटअप पूरा का पूरा सेम होगा, नो चेंज इन सेटअप्स. आपका जो मतलब का डायग्राम है आर लोड एज इट इज. ओके, चलिए तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं आपका आरएल लोड के साथ. ठीक है, आरएल लोड में क्या करोगे आप लोग बच्चे लोग, आपका डायग्राम ऑलरेडी सेम रहेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरह. जस्ट डबल क्लिक ऑन द कंटिन्यूटी पे आप लोग डबल क्लिक करोगे. आफ्टर क्लिकिंग द न्यू विंडो विल बी ओपन एंड विंडो विल बी ओपन लाइक दिस. एज हियर यू हैव नेम एज अ स्कोप. तो स्कोप के लिए कोई नाम दिया है कि आपने? नो नेम यू हैव गिवन. देयरफॉर बाय डिफॉल्ट दे हैव टेकन अ स्कोप डेटा. ओके, स्कोप डेटा ले लिया. नाउ हियर देयर इज 3 inputs, input 1, input 2 or input 3. What are these 3 input? Input 1 is your input voltage. What is input 2? Input 2 is your current. And what is input 3? Input 3 is your voltages. These are the 3 inputs. Okay, now as our aim says, analyze harmonic on AC and DC side. AC means your input and DC means your output. Therefore first we will analyze a harmonic on AC. तो AC का इनपुट साइड चेंज टू 50 हर्ट्ज, डोंट चेंज एनीथिंग, एंड आफ्टर कंप्यूट इट. जैसे आप कंप्यूट पे बटन दबाओगे, योर प्रेस द बटन, देन दिस बार ग्राफ विल बी ओपन एंड हियर दे हैड एनालाइज एंड एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू. जस्ट रीड इट. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपने, व्हाट इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज यू हैव पुटन. व्हाट इज द वैल्यू? 123.2. And what is your total harmonic distortion? Is 26.42% is input harmonic distortion. Similarly, for your current, for output current, change it, compute the value. Again, for input में ही आपका maximum था, तो यहाँ पे और current के अंदर और बढ़ जाएगा. Therefore, total harmonic distortion for your current is 62.70%. As you move for a voltage, in voltage also you are having a harmonic distortion to a range of 117.29%. okay, these are the harmonics that are present in your cycle. okay, as you see over here also you had put the values of, कितना वैल्यू आपने पुट किया था? you have put the values 100, बट आपको पिक कितना मिल रहा है? इट इज मैक्सिमम, ग्रेटर देन दैट. ठीक है ना, इसके लिए आपको थर्ड हार्मोनिक या टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज ऑल्सो हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, दिस वाज एवरीथिंग फॉर योर आरएल लोड. नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर आरएल लोड. टू परफॉर्म ऑन द आर लोड, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली डबल क्लिक ऑन योर लोड एंड चेंज टू आर. okay, I had changed to R load. Now next step what you have to do, just click on a run button, your circuit will be on, circuit will be running. After that you have to click on the scope, see the waveform. This is the waveform for your R load. This is your input voltage, this is your output current, and this is your output voltages. Now in this you have to analyze the FFT. So this is your FFT analysis block. This is your scope data. Input voltage is this one. Now
in the input signal there are three signals, input 1, input 2 and input 3. Input 1 is your input voltage, input 2 your output voltage, output current, and input 3 is your output voltages. So one by one we are going to see. First we are going to see the input voltage change to a 50 hertz and compute. After computation, after clicking on the computation, you will get this ready-made graph. This is your third harmonic distortion, that is 32.68% is your harmonic analysis. So we are getting 32.68% harmonics in your input side. Okay. Similarly, you are going to perform the second, that is current. For a current, this is your, sorry, this is, I have to click on the third. Okay, this is your second. Now click it. This is your input current. ये आपका input current है. On the input current, it is 87.61% third harmonic distortions is there. Similarly, for the voltages, this is your output voltage, and for the output voltage you are getting 87.61%. This was your experiment, fourth experiment that we have performed, and for the next experiment, see you the next time. Thank you guys.